अस्सलाम वालेकुम, ciao a tutti। आज के वीडियो में हम कमूने में इस्तेमाल होने वाले कुछ मुफीद इटालियन जुमले सीखेंगे। ये जुमले आपको कमूने में मुख्तलिफ मौके पर बातचीत करने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, मालूमात पूछना। il comune, il comune, इसका मतलब है यूनियन काउंसिल। अगला है इंफॉर्मेशियोने, इंफॉर्मेशियोने, इसका मतलब है इंफॉर्मेशन। l'ufficio, l'ufficio, यानी ऑफिस। il documento, il documento, इसका मतलब है डॉक्यूमेंट्स। अब हम इनके जुमले देख लेते हैं। Scusi, dov'è l'ufficio informazioni? Scusi, dov'è l'ufficio informazioni? माफ़ कीजिएगा, इंफॉर्मेशन ऑफिस कहाँ है? Ho bisogno di alcune informazioni. Ho bisogno di alcune informazioni. मुझे कुछ मालूमात की ज़रूरत है। Quali documenti sono necessari per questa procedura? Quali documenti sono necessari per questa procedura? इस अमल के लिए कौन से दस्तावेज ज़रूरी हैं? Posso parlare con un responsabile? Posso parlare con un responsabile? क्या मैं किसी जिम्मेदार से बात कर सकता हूँ? L'ufficio è aperto il sabato? L'ufficio è aperto il sabato? क्या दफ्तर हफ्ते के दिन खुला होता है? अगला है रहाइश रजिस्टर करना। इसके लिए कौन से जुमले इस्तेमाल होते हैं, चलिए वो देखते हैं। Vorrei registrare la mia residenza. Vorrei registrare la mia residenza. मैं अपनी रहाइश रजिस्टर करना चाहता हूँ। Qual è il modulo per cambiare l'indirizzo? Qual è il modulo per cambiare l'indirizzo? पता तब्दील करने का फॉर्म कौन सा है? अगला है Quanto tempo ci vuole per completare la registrazione? Quanto tempo ci vuole per completare la registrazione? इसका मतलब है रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने में कितना वक्त लगता है? Devo portare una prova di residenza? Devo portare una prova di residenza? क्या मुझे रहाइश का सबूत लाना होगा? Dove posso consegnare questi documenti? Dove posso consegnare questi documenti? इसका मतलब है मैं ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ जमा करा सकता हूँ? द नेक्स्ट वन इज़ सर्टिफिकेट की दरख्वास्त देना। चलिए अब हम इनके जुमले देख लेते हैं। Vorrei richiedere un certificato di nascita. Vorrei richiedere un certificato di nascita. मैं पैदाइश का सर्टिफिकेट हासिल करना चाहता हूँ। Quanto costa un certificato di matrimonio? Quanto costa un certificato di matrimonio? इसका मतलब है शादी के सर्टिफिकेट की कीमत कितनी है? अगला है Posso richiedere il certificato online? Posso richiedere il certificato online? क्या मैं ऑनलाइन सर्टिफिकेट की दरख्वास्त दे सकता हूँ? Qual è il tempo di attesa per ottenere il certificato? Qual è il tempo di attesa per ottenere il certificato? सर्टिफिकेट हासिल करने में कितना वक्त लगता है? अगला है Ho bisogno di un appuntamento per questa richiesta. Ho bisogno di un appuntamento per questa richiesta. क्या इस दरख्वास्त के लिए मुझे अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है? द नेक्स्ट वन इज़ टैक्स और फीस अदा करना। चलिए इनके जुमले देख लेते हैं। Il primo è Dove posso pagare le tasse comunali? Dove posso pagare le tasse comunali? मैं बलदियाती टैक्स कहाँ अदा कर सकता हूँ? Quali sono le tariffe per questo servizio? Quali sono le tariffe per questo servizio? इस सर्विस के लिए फ़ीस कितनी है? अगला है
Posso pagare con la carta di credito? Posso pagare con la carta di credito? क्या मैं क्रेडिट कार्ड से अदायगी कर सकता हूँ? Posso avere una ricevuta per favore? Posso avere una ricevuta per favore? इसका मतलब है क्या मुझे रसीद मिल सकती है प्लीज़? Qual è la scadenza per pagare questa tassa? Qual è la scadenza per pagare questa tassa? इस टैक्स की अदायगी की आखिरी तारीख क्या है? द नेक्स्ट वन इज़ पता तब्दील करना। चलिए जुमले देख लेते हैं। Devo fare un cambio di indirizzo. Devo fare un cambio di indirizzo. मुझे पता तब्दील करना है। Quali documenti sono necessari per il cambio di indirizzo? Quali documenti sono necessari per il cambio di indirizzo? पता तब्दील करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं? अगला है Dove posso trovare il modulo per il cambio di indirizzo? Dove posso trovare il modulo per il cambio di indirizzo? पता तब्दील करने का फॉर्म कहाँ मिलेगा? Devo presentare una prova di indirizzo? Devo presentare una prova di indirizzo? क्या मुझे पते का सबूत पेश करना होगा? Quanto tempo ci vuole per aggiornare il mio indirizzo? Quanto tempo ci vuole per aggiornare il mio indirizzo? मेरा पता अपडेट होने में कितना वक्त लगेगा? द नेक्स्ट वन इज़ गाड़ी रजिस्टर करना। अब इनके कुछ जुमले देख लेते हैं। Vorrei registrare il mio veicolo. Vorrei registrare il mio veicolo. मैं अपनी गाड़ी रजिस्टर करना चाहता हूँ। Quali sono i requisiti per la registrazione del veicolo? Quali sono i requisiti per la registrazione del veicolo? गाड़ी रजिस्टर करने के लिए क्या शर्त हैं? अगला है Quanto costa la tassa di registrazione? Quanto costa la tassa di registrazione? रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? Dove posso ottenere la targa? Dove posso ottenere la targa? मैं नंबर प्लेट कहाँ से हासिल कर सकता हूँ? Quanto tempo ci vuole per completare la registrazione? Quanto tempo ci vuole per completare la registrazione? रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने में कितना वक्त लगेगा? अगला है शादी रजिस्टर करना। चलिए अब हम इनके कुछ डायलॉग देख लेते हैं। Il primo è Vorrei registrare il mio matrimonio. Vorrei registrare il mio matrimonio. मैं अपनी शादी रजिस्टर करना चाहता हूँ। Quali documenti sono necessari per la registrazione del matrimonio? Quali documenti sono necessari per la registrazione del matrimonio? शादी की रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं? अगला है Quanto tempo ci vuole per ottenere il certificato di matrimonio? Quanto tempo ci vuole per ottenere il certificato di matrimonio? इसका मतलब है शादी का सर्टिफिकेट हासिल करने में कितना वक्त लगेगा? Abbiamo bisogno di testimoni per la registrazione? Abbiamo bisogno di testimoni per la registrazione? इसका मतलब है क्या रजिस्ट्रेशन के लिए हमें गवाहों की ज़रूरत होगी? Dove si trova l'ufficio per la registrazione dei matrimoni? Dove si trova l'ufficio per la registrazione dei matrimoni? शादी की रजिस्ट्रेशन का दफ्तर कहाँ है? उम्मीद है कि आपने ये मुफीद इटालियन जुमले सीखे होंगे जो कमूने में आपके काम आएंगे। अगर आपके पास कोई और टॉपिक है जो आप मुझे सजेस्ट करना चाहें तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।